Good morning, my dear students and my dear friends, and welcome to the next class of your maths. And today we will start our chapter, that is our second chapter, addition and subtraction. तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे and that is the addition and subtraction. We have already started this chapter in online classes, but I am making the videos for all the students. ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस शायद अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या नेटवर्क इशू की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं. So let's start the chapter, that is the addition and subtraction. Okay, it is chapter 2, addition and subtraction. Addition and subtraction. Okay, addition and subtraction start करना है. And you can see on page number 24 there is a warm up question. Okay, जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन A and क्वेश्चन B, that you have to solve. It is very easy. I know that you are able to solve these questions. ठीक है, so I am moving directly towards the addition facts. मैं चल रहा हूँ directly addition की तरफ. Before that, I want to tell, I already know that we have already learned the addition and subtraction in previous classes, है ना. हमने addition और subtraction पहले वाली classes में study कर लिया है. But now we have to add a big numbers, है ना. पहले हम लोग 3 डिजिट के नंबर्स को ऐड करते थे. Now we have to add the numbers which at least 5 digit number or 6 digit number maybe. So let's start with addition facts. Okay, the first topic is addition facts. In simple way we can say that the properties of addition. ठीक है, so अब हमारे पास में 3 addition facts है. That means we have the 3 properties of addition. So the first one is, पहली क्या है, if we changing the order, it is already written in page number 25. Okay, number can be added. Okay, this is the first topic, and the property is number can be added in any order. Number can be added in any order. The sum is remains same, है ना. The sum is or will remain same. Or we can say that if the numbers are added in any order, the result will not affect. Okay, that means we got the same answer. How numbers can be added in any order? हम लोग नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. द सम, दैट मीन्स द रिजल्ट, जो हमारा एडिशन आया है, दैट इज कॉल्ड सम, विल रिमेन सेम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? दिस सेंटेंस इज एक्चुअली सेइंग दैट आप किसी भी नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो. मीन्स व्हाट? लेट्स टेक एग्जांपल. 5 plus 6, you will get 6 plus 5 is, yes, 11. Okay, 6 plus 5 is 11, and 5 plus 6 and 6 plus 5 is also 11. Look here, I am writing crossly. 5 plus 6 is 11, and if I twisted the digit, अगर मैंने digit को twist कर दिया, मतलब क्या कर दिया, I am writing 6 instead of 5 and 5 instead of 6. मैंने 5 के जगह 6 और 6 के जगह 5 लिख दिया. I just twisted, that means I changed the order of the number. मैंने डिजिट के या नंबर के ऑर्डर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया. बट अवर रिजल्ट इज नॉट चेंजिंग, दैट मीन्स अवर सम इज नॉट अफेक्टिंग. हमारे रिजल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता. अंडरस्टैंड एवरीवन? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग. इफ आई एम टेकिंग 15, ओके, 15 plus 20 and 20 plus 15. What is happening here? I am adding 20 in 15. मैं यहाँ पर 20 को 15 में ऐड कर रहा हूँ. And here I am adding 15 in 20. यहाँ पर मैं 15 को 20 में ऐड कर रहा हूँ. What is happening here? I am just changing the order of the number. I am writing the number. मैंने दोनों नंबर्स को क्या कर दिया, जगह चेंज कर दी. That means उसको ट्विस्ट कर दिया. But our result will affect it. Just check it out. It is 5 and this is your 3 and this is also 35. That means एडिशन करते वक्त हम लोग नंबर्स को इधर उधर लिख सकते हैं. दैट मीन्स व्हाट? वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर. आवर रिजल्ट इज नॉट अफेक्टिंग. दैट मीन्स द सम इज ऑलवेज रिमेन सेम. इफ वी आर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर, we will get the same result. Again I am saying,
इफ वी आर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर, हमने नंबर के ऑर्डर को चेंज कर दिया, देन ऑल्सो वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, दैट मीन्स द सम विल रिमेन सेम। ठीक है, हमारा रिजल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, जस्ट क्लिक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक। I hope you have clicked a screenshot. Let's proceed towards the next addition fact. That means second property of addition, and that is the property of 1. तब हमारा second property क्या है? Second property is property of 1. That means if we added 1 in any number, if 1 is added in any number, अगर हम लोगों ने 1 ऐड कर दिया तो we will get the successor of that number. The sum is, if 1 is added in any number, the sum is, अब हमारा जो sum रहेगा वो क्या रहेगा? Is the successor. The sum is the successor of that number. ठीक है, what is I have written here? If 1 is added in any number, the sum is called as the successor of that number, or the sum is the successor of that number. अगर हम लोग किसी भी नंबर में 1 ऐड कर देते हैं, so what we will get? We will get the successor of that particular number. For example, if there is 5 है, अगर मैं 5 में 1 ऐड कर दूं, so what will happen? It becomes 6. भी 5 6 बन जाएगा, and 6 is what? 6 is the successor of 5. ठीक है, ओके, so let's take example. अभी एग्जाम्पल क्या बोलेगा भाई? 27 plus 1. Now what I'm doing here? I'm just adding 1 in 27. मैं 1 को 27 में ऐड कर रहा हूँ. Okay, now what will happen? So add it. It becomes 28. So this is 28, and 28 is the sum. 28 is the sum of, किस का sum है? 27 and 1. नहीं समझा? फिर से देखो, 28 is the sum. जो हम लोग ऐड करके ना, ध्यान से समझना, ठीक है, जब हम लोग दो नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आया, दैट मीन्स हमारा जो आंसर है, दैट इज कॉल्ड एज द सम. इफ वी आर एडिंग 2 numbers, so we will get the result, and that result is called as the sum. 1 plus 1, we got 2, and 2 is what? It is the sum of 1 and 1. That means it is a result. Okay, the result of addition is called as sum. sum किसको बोलते हैं? एडिशन के रिजल्ट को सम बोलते हैं. ओके, सो नाउ 27 और 1 को मैंने ऐड कर दिया, दैट मीन्स व्हाट? 28 इज द सम ऑफ 27 एंड 1, है ना. हमारा 28, 27 और 1 का क्या है? सम है. क्या है? सम है. क्या है? हाँ, सम है. ओके, सो नाउ हियर 28 इज द सम ऑफ 27 एंड 1, and the sum is called as the successor of particular number. So it is very simple. We can say that 28 is the successor of 27, because we are adding 1 now. We are adding 1 in 27. So what is the sentence? If 1 is added in any number, if 1 is added in any number to the result, that means the sum is the successor of that particular number. तो जो हमारा 28 है वो क्या हो जाएगा? 27 का सक्सेसर. कितना इजी है ना. 28 is successor of, किसका सक्सेसर है भैया? हाँ, 27. So it is a successor of 27. Understood? और एक एग्जाम्पल ले साइड में. हाँ, ओके, let's take a 53. Now it is a number. Which number it is? 53. हाँ, 53. If we are adding 1 here, so what will be the sum of 53 and 1? 54. So we can say that now we are adding 1 in which number? 53. So the sum, ये कौन सा है? Sum is called as the successor of 53. So we can say that 54 is the successor of 53. अगर कहीं बुक में या क्वेश्चन पेपर में आ गया कि find out the successor of a particular number, so what we will do? We will just add 1. हम लोग उस नंबर में क्या करेंगे? 1 को ऐड कर देंगे.
Understood everyone? Okay, I hope you understand. And if there is any problem for understanding, you can reverse the video. आप क्या कर सकते हो, पीछे जाकर फिर से देख सकते हो, ठीक है? Okay, so just click a screenshot and note down in your notebook. ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट निकाल लो. And you can click a screenshot with the help of these 3 fingers. Take a 3 finger and just scroll down it. ठीक है? और press a volume down button and power button simultaneously for a few seconds. The screenshot will automatically come. तो फटाक से स्क्रीनशॉट निकाल लो. Okay. So let's proceed towards the next property of addition, that is the property of zero. हाँ, zero ऐड करेंगे तो भैया कुछ नहीं होने वाला है, वही वापस आने वाला है ना? We will get the same answer, that means the same number. तो चलिए फटाफट से थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं. Okay. So what is the property of zero? When zero is added to a number, then the sum is the number itself. But simple. So third property, that means the third addition fact is when zero. Okay, ये zero है भैया, हाँ, डिजाइन वाला zero है. Okay, zero is added, and the zero is added in a number. The sum is the number. The sum is the number itself. Wow. Okay. So what is the third property? When the zero is added in a number, so the sum is called as the sum is the number itself, or the sum is called as the number itself. Call भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. Means what here? Okay. So the third property is when the zero is added in any number, the sum is the number itself. Okay. Now how can we understand it? भैया अगर हम लोगों ने किसी नंबर में zero ऐड कर दिया, so what will happen? We will got the same number. That means what? Number itself. वही नंबर वापस खुद ही आ जाएगा, है ना, हमारे रिजल्ट में आ जाएगा. एग्जाम्पल भी बहुत ईजी है. लेट्स टेक एग्जाम्पल. सो 5 plus 0, you will get 5. Look here. So 0 is added in a particular number. The sum is a number itself. फिर से नंबर वही आ गया. 155 plus 0, 155 plus 0. We will get the same result. That means the same number itself. Number itself. When we are adding 0 in any number, what is the sum? Sum means what? The sum is the result of addition. The sum किसको बोलोगे? Result of addition को. So what is the result of addition? This is 155. हमारा आंसर है, that is called as sum. Yes. So here the sum is the number itself. तो जब हम लोग उसका sum करेंगे, that means what? जब हम लोग उसको add करेंगे, तो हमारे पास वही नंबर वापस reflect हो जाएगा. That means what? We will get the number itself. Understood everyone? And remember, these properties may become in fill in the blanks. है ना, ये properties आपके fill in the blanks में भी आ सकती है. So just remember it. Okay. Note down in your notebook. Click a screenshot or pause the video and note down it. Okay, so let's proceed towards the next topic. There is a mental math. Okay, there is a mental math where on page number 25, I think you can solve that question. Okay, so look at the first question. What is the first question? Okay, एक मिनट में साइड में हो जाता हूँ. Okay. Now look at the first question. So first question is fill in the blanks plus 899. That means what we have to add in 899 so that we get 900. हम लोग 899 में क्या प्लस करेंगे तो हम लोगों को 900 मिलेगा? आंसर इज सिंपल, 1, है ना, 1 मिलेगा. That means answer is 1. Okay. Look at the question number 2. Successor of 999.
successor, that means what? If you want to find out the successor, what we will do? We will just add 1. हम लोग उस नंबर में 1 ऐड कर देंगे, है ना? So what is the successor of 999? Answer is not there. Okay, 999 और 1 प्लस कर दूंगा तो क्या होगा? हाँ, 1000 आएगा भैया. Okay, so the answer is 1000. Okay. Question number 3. 5426 plus 0. So we have already learned the third property, that is the property of 0, है ना? What is the property of 0? Don't write anything. First of all, recall it. Okay? हमने 3 properties पढ़ी. We have learned 3 properties. What is the first property? The first property is saying that if we are changing the order of number, the result is same. That if we are changing the order of the number, the result is same. That means आपका जो आंसर है वो अफेक्ट नहीं होगा. We will get the same result. चाहे ये वाले नंबर्स को इसमें प्लस करो या फिर इस नंबर को इस नंबर में प्लस करो, we will got the same result. Okay. And the second property is when the 1 is added in any number, we will got the successor of that number. अगर हम लोगों ने 1 प्लस कर दिया तो क्या होगा? हमें सक्सेसर मिलेगा. And the third property is property of 0, and the property of 0 is saying that when we are adding a 0 in any number, the sum is number itself. Okay? तो भैया यहाँ पे नंबर itself आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 में, that is 5426 plus 0, we will got the same result. That means we will got the number itself, 5426. So the third answer is 5426. Now look at the fourth question. हाँ, fourth question थोड़ा सा difficult नहीं है, easy है. Just wait. हाँ, okay. Look at the fourth question. 5 more than a dozen. Okay. 5 more than dozen. Okay. Now there is a question. What is the meaning of dozen? The meaning of dozen is 12. ठीक है? एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होता है. ठीक है? कभी जाकर के आप शॉपकीपर के पास जाना है आपको, मतलब आपको फ्रूट मार्केट जाना है और आपको बनाना परचेस करना है, तो आपको रेट बताएगा 40 रुपीज़ डजन, 50 रुपीज़ डजन. डजन मीन्स 12. और अगर आप बोलते हो प्लीज़ गिव मी 1 डजन बनाना, तो शॉपकीपर विल गिव 12 बनानास. ठीक है? आपको अगर 1 डजन चाहिए तो आपको 12 बनानास मिलेंगे काउंट करके. ओके. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डजन? डजन मीन्स 12. ओके. सो वी विल रिप्लेस डजन बाय 12. So what is meaning? 5 more than dozen. What is the meaning of more? More में क्या करते हैं? Yes, addition. So simple, हम लोग 5 को add कर देंगे 12 में, and we will get, जल्दी, बस 5 more than dozen is 12. एक और क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है? 5 less than dozen. Less than में क्या करोगे? Subtraction. So what we will do here? We will subtract 5 from 12. हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे? 12 में से 5 को subtract कर देंगे. Okay? So the fourth answer is 17. Write down 17. Okay. Now look the fifth question. हाँ, fifth question is also simple. Added to 50. Added to 50. Okay, that is your 50. Huh? Added to 50. So that we will get 150. What is the meaning of added? It indicates addition. So the question is, what we have to add here? In 50. 50 में क्या प्लस करोगे, क्या एडिशन करोगे? So that we will get 150. 50 में कौन सा नंबर ऐड करोगे? भैया कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो हम लोगों को 150 मिलेगा? हाँ, आंसर बहुत इजी है. वी विल गेट, इफ वी एडेड 100 इज एडेड टू 50. 100 अगर हम लोगों ने ऐड कर दिया 50 में, तो वी विल गेट 150. ओके, इतना सिंपल था, ये तो बहुत इजी है. ठीक है? प्लीज डू द प्रैक्टिस ऑफ डजन क्वेश्चन एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाइए. दैट मीन्स मेक अ क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, देयर इज नो एनी इशू. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुक के ही क्वेश्चन सॉल्व करो, अपनी मर्जी से भी कर सकते हो. ओके, लुक द सिक्स्थ क्वेश्चन. ओके, नाउ लुक एट द सिक्स्थ क्वेश्चन. देयर इज 48. ओके, 48 plus fill in the blank plus 73 is equal to 73 plus 48 plus 10. Now look at the
अब हमारा जो 48, हम लोगों को पता है कि हम लोग नंबर ट्विस्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर, द रिजल्ट इज सेम, द सम इज रिमेन सेम। ठीक है, क्या होगा, हमारा सम रिमेन सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। सो 48 इज प्रेजेंट हियर इन द लेफ्ट हैंड साइड, 48 इज प्रेजेंट टुवर्ड द राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर इक्वल टू, ठीक है। 73 इज प्रेजेंट 2 टाइम्स, बट 10 इज नॉट प्रेजेंट, 10 हमारा प्रेजेंट नहीं है, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज 10। ठीक है, ओके। Look at the question number 7. 39519 plus something is equal to 39519. अरे 0 नंबर itself आ गया है ना, और what is this 0, ठीक है। सक्सेसर ऑफ 4528, दैट मीन्स 4528 का सक्सेसर कैसे निकालेंगे, एडिशन करेंगे, क्या एडिशन करेंगे, 1, हाँ ओके 1 ऐड कर दिए, सो वी विल गेट 4529, ओके 4529, 1 more than 9999, अरे ऐड कर दो, we will add it, so we will get 10,000 and 3, हाँ look here, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भैया, बहुत इजी है, 3124 प्लस 279 इज इक्वल टू 279 प्लस something, okay, this is your equal to, what is this, equal to, what is that, what is the indication of that equal to, that means both are equal, when they will be equal, 3124 plus 279, अब हम लोग अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, तो we will get the result, okay, now let's take the number which is towards the right hand side, that is 279, look here, 279 this is प्रेजेंट एट द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वल टू, उस साइड है, 279 भी है, 279 भी है, ओके, बोथ द साइड 279 आर इज प्रेजेंट, बट 3124 इज हियर, यहाँ नहीं है, ओके, सो वी विल राइट हियर 3124, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आंसर, मैंने क्यों लिखा, अंडरस्टैंड, ओके, वी आर राइटिंग द नंबर like this, we are just changing the order of the number, 279 and 3124, उस साइड में क्या है, बस पोजीशन चेंज हो गई है ना, we have written 279 first and then we have written 3124, उसके बाद हमने वो लिखा है, just it is an example of changing of orders, ठीक है, ऐसा लिख दिया, okay, so that is about the mental maths on page number 25. Quickly note down the answers from the screenshot. यहाँ पे शायद स्क्रीनशॉट होगा, ठीक है, वहाँ से आप देख करके लिख लीजिए फटाक से, ओके। Now we will proceed towards the next topic, and the next topic is addition with and without regrouping, addition without regrouping, ठीक है, we have already learned about addition, yes, so let's take example, यहाँ पर regrouping नहीं होगा, ठीक है, so take example 1 2 3 4 4 3 1 2, okay, now just add it, so this is your ones, this is your tens, 100 and the 1000, so if we are adding that number, so always remember that they both are properly arranged, ठीक है, ये नंबर ऐसा मत कर देना, ठीक है, if you are writing 2 in just below the 2, so what will happen, this 1 will go to outside, ठीक है, the digit should be proper, आपको बराबर कॉलम में अरेंज करके एडिशन करनी है, ओके, so just add it, 4 plus 1 gives us 5, 3 plus 3 is 6, 4 plus 2 is also 6, 2 plus 1 gives us 3, ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एकदम इजी वाला, 1 1 1 1 प्लस 2 2 2 2 प्लस 3 3 3 3
वाह, ब्यूटीफुल. 3 plus 3 is 6, 6, 6 and 6. Okay, that is the addition without regrouping. Addition without regrouping, हाँ, यहाँ regrouping हम लोगों ने नहीं किया है. Okay, note down in your notebook or click a screenshot with the help of 3 fingers or press the volume down button and the power button simultaneously for a few seconds. The screenshot will automatically come. Okay, so let's proceed towards the next topic, that is the addition without regrouping. नहीं, without regrouping नहीं, with regrouping. With regrouping पढ़ेंगे अब हम लोग. And please solve the question which is present on page number 26. All the questions are very easy, बस addition तो करना है ना? Okay, so let's proceed towards the addition without, हाँ, why without? With regrouping. Okay, हाँ, addition with regrouping. So here the regrouping is okay. Okay, so अब यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं इनमें regrouping होगा. और व्हाट इज मीन बाय रीग्रुपिंग? अब हम लोग पहले समझते कि व्हाट इज मीन बाय रीग्रुप. व्हाट इज रीग्रुपिंग? वी नो दैट वी कैन राइट वन डिजिट एट वन प्लेस. Let us suppose that if we are adding 10 plus 10, so we are getting 20. Okay, or simple. If there is 9 and 9, if we are adding 9 plus 9, so what we 9 plus 9 is 18. So can I write 18? 18 is a 2-digit number, है ना? तो मैं क्या 18 दोनों के दोनों को वन प्लेस पे लिखूंगा क्या? 9. Why? It is only 1-digit number, so we can write 9 on the ones place. But 18 is not a 1-digit number; it is 2-digit number, and that's why 8 will present at the ones place, and 1 is regrouped. That means what? It is forwarded to the tens place, and we will write 1 after the ones place. That is, it becomes 18. Okay? Okay. ठीक है, इसी को regrouping कहते हैं. That means what? Carry forwarding. हाँ, तो अब एग्जाम्पल लेते हैं, उसको लिखो मत. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. अरे okay, now we have to add this number. So how can we add it? Now we have to regroup. ठीक है, अभी properly addition करना है. 6 plus 5 gives us what? 11. Yes, 11. So can we write 11? Both 11 is a 2-digit number. Can I write 11 at the ones place? हाँ, okay, 1 minute. 1, 10, 100 and 1000. 11 is a 2-digit number. Can we write both the digit and ones place? क्या दोनों को दोनों उठा के लिख दूं ones place पे? नहीं, है ना? We will write 1 digit and 1 place. 8 digit एक place में, ठीक है? So we will write 1 here and 1 is carry forwarded to the tens place. Regrouping. Okay, now 7 plus 4 plus 1. 7 plus 4 gives us 11. हाँ, 7 plus 4 is 11. 11 plus 1 is 12. Again 12 is a 2-digit number. क्या 12 लिखूं? नहीं, 12 नहीं लिख सकते because 12 is a 2-digit number. So we have to write 2 here. 1 is forwarded to the next place. That means the 100th place. हो गया. अब 8 plus 3. 8 हो गया. 9, 10, 11 and 12. Okay, so again we will write 2 here and 1 is forwarded to the next place, that is the 1000th place. Then 9 plus 2. Again 12. हाँ, 9 plus 2 is 11. 11 plus 1 is 12. Now here 12 is here. Okay, now the answer is 12. So can I write 12 here? Now you will say that no sir, है ना, 1 तो carry forward होगा. But here is not any digit. कहाँ carry forward होगा भैया, है ना? So we will write directly 12. Or you can say that there is a 0 at the 10,000 place. 1 is forwarded to the 10,000 place and 1 is written here. Okay, दोनों तरफ कोई भी लॉजिक लगाओ, आंसर इज सेम. ओके, सो
Let's take one more example. 5, 4, 3, 1, ठीक है, 8, 7, again 8. Okay, now we have to add this number. 5431, this is your 1, this is your 10, 100 and 1000. Okay, so add it. 7 plus 1 gives us 8, 8 plus 3, 11, so we will write 1 here, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. Okay, so we will write 3 here and 1 will be here. 5 plus 1 gives us 6. So that is the answer, 6380. Understood how to regroup the numbers? बहुत easy है, ठीक है? Okay, so note down in your notebook or click a screenshot quickly. Okay, solve all the questions which are present on page number 27. Page number 27 में जितने भी questions हैं, you have to solve. Okay, checking addition is very simple, बहुत easy है. Add down, add up. बहुत simple है, आपको addition करके upper side में लिखना है और addition करके down side लिखना है. Okay, अब देखते हैं estimated sum हो पाता या फिर नहीं. Understood everyone? Okay. Let's move towards the next topic, and that is the checking addition. This topic is so simple. I am taking the first question of checkpoint of page number 28. ठीक है, page number 28 में है 1, 3, 5, 6, 6, 8, 4, 5. Okay, it is adding downside, and the same question is here. 1, 3, 5, 6, 6, 8, 4, 5. But but the box is here. Okay, look at this here. That is taking addition. It is very simple. What we have to do here, we will add these numbers and we will write the sum at downside. ठीक है, हम लोगों को इन दोनों numbers को add करना है और हमें मेरा result कहाँ लिखना है? In this box. That means we have to add both the numbers and we will write downside. And here what is happening? We have to add the same number, but we have to write the result upper side. So let's check it out. 6 plus 5. 6 plus 5 is 11. So we will write 1 here. 1 will be carry forwarded. 5 plus 4 plus 1 gives us 10, and that's why we will write 0 here, and 1 is again carry forward to the 100 place. Then 8, 9, 10, 11 and 12. Okay, again 2 will come here and 1 will be forwarded to the 10,000 place. 6, 7, 8. The result is 8201. Okay, if we are adding these two numbers, we are getting 8201. Okay, let's add these two numbers and we will write the answers upper side, just above the numbers. ठीक है, always remember that if we are adding the numbers, always started from one place. ध्यान से समझ लो, जब भी आप addition start करते हो, always start from one place, then tens, then 100 and so on. Okay, so we have to follow the same rule in this question also. 08. हाँ, okay. 6 plus 5 or 5 plus 6. We know that if the order is changed, if we are changing the order of the number, the result is not changing. That means what? The sum is remains same. Same आने वाला है. हाँ, same ही आने वाला है. Okay. 5 plus 6 gives us 11. 1 will be here. 1 will be forwarded here. 5 plus 4 is 9. Plus 1 is 10. So we will write 1 here, 0 here. 1 is forwarded. 8, 9, 10, 11, 12. So we will write 2 here. Again 1 is forwarded here. 6, 7, 8. Look at these two numbers. The result is same.
If we are changing the order of number, result is same or the sum is remains same. ठीक है.